Dear students, welcome to virtual classroom of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 9th standard students. Subject is mathematics. Let me begin the class. Dear students, we are going ahead with another type of construction where we have to construct a triangle if its perimeter, base and the angles which include the base are given. Here we have a special item where we will be getting the perimeter. AB plus BC plus CA will be given, and it is given in the first case as 11.3, and angle B and angle C are given. Triangle is ABC. So very special construction, and where again we will be applying the principle of perpendicular bisector theorem, and the steps are given in the textbook. The steps I have copied it over here also, and we know that we need to go for construction. Let me clean the screen surface first so that I can go for clean construction, I would say. Okay, so this is very special because perimeter of a triangle is given, total length of 3 sides, deleting. Okay, now there are certain principles used. Principle I will talk to you later after the construction. Why? Because during the construction you take care that how construction is done, or you just try to understand. So I will be doing it slowly and clearly. First of all, I need to have our magic box, and from there I need the ruler as usual, and I am going to make it is just 3 sides of the triangle is given, but I will be making the total 11.3 centimeter down. It is not the base. We don't know how much is base. We don't know how much is each side, but we are given the total of 3, so I will be drawing that first. Let me take the पेंसिल फॉर इट 11.3 सेंटीमीटर आई एम गोइंग टू ड्रॉ. थोड़ा कुछ स्केल को राइट में लेता हूँ. कंस्ट्रक्शन कैसे एंड होएगा बोल नहीं सकते ना, कितना स्पेस चाहिए. एनीवे स्केल तो कुछ डिफरेंट मेजरमेंट है, बट आई विल ट्राई टू मैनेज इट. ओके, एंड आई टू मार्क 11.3 सेंटीमीटर ऑन दिस, एंड आई विल बी ड्राइंग इट नाउ. 11.3. ओके, now I am going to mark it according to your textbook only, because there should not be any confusion in you. So this is the first step of construction of ABC, but we cannot mark ABC because we have done AB plus BC plus CA together, and let me mark it as it is given in the textbook as P, and the other end can be marked as Q. Okay, just matching with your textbook, that's all. Anything you can put. PQ it is. That means it is quite clear that PQ is not the base. Base must be AB, or BC or CA of the triangle. Okay, now the next step is drawing and 70 degree. 70 degree दिए तो मैं 35 degree draw करेंगे. आप अभी मत सोचो और पूछो मत कि क्यों 35 70 दिए तो 35 क्यों ड्रॉ करें. वो मैं कंस्ट्रक्शन के बाद बताएं कि कंस्ट्रक्शन में एक प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ. वो प्रिंसिपल सब लास्ट में. नाउ इंस्टेड ऑफ 70 आई एम ड्राइंग लेफ्ट साइड फ्रॉम द रफ डायग्राम 35 डिग्री. 70 का आधा. चलो 35 मार्क किया. फिर प्रोट्रैक्टर को रिमूव करना है और स्केल से 35 के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट. Okay, and I will be drawing the line accordingly. Okay. Okay, now you will be drawing the side. It is not the side of the triangle, but we are under construction. As I told you, the principle will be understood at last. I will be connecting the point P with the newly put 35 degree वाले जो point है उससे मैं drawing करने जा रहा हूँ. I will draw it little quite big because the construction may take little more space.
Now I have to draw the other angle which is 60 degree, which is on the other side. I will draw it as 60 का आधा है 30 डिग्री, तो अभी मैं 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे. अभी ये तो 35 डिग्री हो गया, दूसरे एंड पे मुझे 30 डिग्री ड्रॉ करना है. ओके, आई विल डू दैट नाउ. Let me draw 30 degree. 30 degree is half of 60 degree. That is what you have to understand now. This is 30 degree. Let me remove the protractor. Take the scale, bring it over here and draw. Thirty degree is drawn. 30 degree and 35 degree are not given in the question. These are half of the given angle. One is of 70 and another is of 60. These two things we completed. Now what we are going to do is very important. That point is A, and which will be the A of our A vertex of our triangle itself. Now what we will do is we have to apply the principle of perpendicular bisector. Here we have to make the perpendicular bisector of two sides. One is AQ and AP. That is what is we are going to do next. Okay. For that, I need to have a compass also. Compass will help us to divide or create perpendicular bisectors, right? Okay. Let me remove this protractor and scale and all. We'll bring it back later. Now what we need is a compass. Here the compass is. Compass can be used for making the bisectors. The delay in my statement was because it was not responding to my clicks. That's why. Sorry for that. I will. The speed of the computer is affecting. Okay, you have to draw arc on both sides of the line segment AQ here in order to draw a perpendicular bisector. Take the compass, put it on the other side. Somewhat manageable. We'll redraw it, no problem. But we'll complete this drawing now, and the other side it will cross. Good. It intersected, and we have to redraw it for the sake of getting it better.
Let me see whether I have placed accurately. Okay, no problem. Okay, complete it, and we got the intersection. So now we can draw the perpendicular bisector to the side AQ. And you know that the point, any point on the perpendicular bisector is equidistant from the end points of the segment. That principle again here we are going to apply here. First we will draw the perpendicular bisector now. Okay, other two construction also we had perpendicular bisector. So perpendicular bisector is what is helping us to draw these triangles. Good. when we study about perpendicular bisector इतना नहीं सोचते कि इतना इम्पोर्टेंट है. चलो perpendicular bisector ड्रॉ करता हूँ. Okay, I can draw it. Sometimes the click doesn't respond. I don't know. After this video I can check it. I will be drawing the perpendicular bisector now. Okay, that's a bisector. Okay, the same way we have to draw the perpendicular bisector to the side AP also. तो उधर भी यही काम करना है. स्केल को ज़रा हटा देता हूँ और इनको ज़रा पॉइंट पे रखता हूँ और इनको ज़रा एंगल बनाना है, मतलब आर्क बनाया. उधर भी एक आर्क बनाएंगे. ओके, नो प्रॉब्लम. टेक द कॉम्पास टू द अदर साइड. Just tilt it, bring it to the other end. Okay, good. It will be the same line, but we will continue that. Okay, we'll draw it. Luckily, it is intersecting. We'll go to the other side of compass, I mean the line segment AP. We will get how it works. Okay, good. It goes smoothly. Good. There will be getting again an intersection. There's a peculiarity for the compass. तुम्हारा पेंसिल जैसा नहीं है, पीछे एक ही साइड चलेगा तो फिर रिटर्न में नहीं मार्क करेगा. Not a problem. We will draw it again, keeping it exactly how it was. Okay, good. We'll draw it from behind. Okay, no problem. It's done. Now we need this scale to complete the construction. My dear students, this ought to be done with a lot of patience and care so that your diagram comes out smoothly. और मेरे जैसे आपको कलरफुल नहीं बना सकते, आप पेंसिल से बनाएंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, okay, we have to connect this, not those two. Okay, now we can draw the side bisector again. Bisector and perpendicular bisector of AP now. Perpendicular bisector of AP to be drawn. Okay, now this is the bisector of AP. Okay, perpendicular bisector of AP is drawn. Better it is draw with red because both bisectors are red in color. We got two bisectors now, and we got 2 points on the line PQ with the help of these bisectors. Those points are very important. अभी आपको तो थियरी बताता हूँ. अभी सोचते होंगे 70 की जगह पे 35 क्यों लिया, 60 की जगह पे 30 क्यों लिया, बाइसेक्टर से क्या होता है, ये सब अभी क्लियर हो जाएगा. Now let us mark all these points. This point, the other point, and these are the points on which we are going to construct a triangle. Let me complete that also. You keep on watching. I will be keeping on doing. Scale तो मेरा बात सुनता नहीं है. Let it be. I will make it listen to me. Make it follow me. Okay. चलो कैसे भी हम डिजिटल को मैनेज करेंगे. ओके, चलेगा. थोड़ा कुछ डिजिटल मिसमैनेजमेंट, डिजिटल एरर्स विल बी देयर. विल कंप्लीट द ट्रायंगल. परफेक्शन करना जाएगा तो ज़्यादा टाइम जाता है, आपका भी जाएगा
और टाइम जाने दो. कंस्ट्रक्शन तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और कंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो गया तो पूरा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर जाएगा. ऐसा नहीं होना मांगते. राइट, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, the required triangle I mean, the other side also to be drawn. Okay, गुड. आप सोचते होंगे सर किसको गुड बोल रहे हो, स्केल को गुड बोल रहे, मेरा बात सुना ना इसलिए. ओके, नाउ इट इज ए कॉमन वर्टेक्स and here it is given. Here also I am putting a green color because that is a required triangle. आपको और मुझे लगने के लिए जो चाहिए हमको मिल गया. वो कैसे रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, तो उसका एंगल 70 60 सब आना मांगते हैं ना. That is principle I am using. Here it is perpendicular bisector, both are perpendicular bisectors. You know, perpendicular bisector will be dividing the side equal into two equal halves and it will be 90 degree. You also know that any point on the perpendicular bisector will be equidistant from the end points of the segment. In that case, ये तो इधर इक्वली डिवाइड हुआ, वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है. दोज टू, दैट मीन्स हियर दीज टू व्हिच आई मार्क्ड नाउ विल बी इक्वल बिकॉज दे आर equidistant from the two ends AP, and the angle also will be equal according to isosceles triangle, and here it will be 70 by remote interior angle theorem. तो हमने ये पहले ही प्रोज्यूम किया, उधर 35 डाला और इधर isosceles बन गया, दोनों 35, टोटल विल बी 70 बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. ये प्रिंसिपल है हमारा. तो वैसे तो इधर भी वही होगा. दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट एंड इट इज वी नो दैट हियर द एंगल इज 30 वी हैव टेकन. कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको बोलने का जरूरत नहीं, मैं फिर भी लिख के रखता हूँ. इट इज इन सच ए वे दैट पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट. सो हियर ऑल्सो दिस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये सब आपके लिए लिख रहा हूँ. नाउ दिस पॉइंट इज 30 डिग्री, द अदर वन वी हैव टेकन 30, तो ये भी 30 होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा. आइसोसेलेस ट्रायंगल मालूम है ना, दो साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल. दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ आइसोसेलेस. हियर इट विल बी द टोटल विल बी 60 डिग्री. तो अपना ट्रायंगल का 70 आया, 60 आया, वही तो बताया था और वो मिल गया हमको. और ट्रायंगल ABP अगर आप देखेगा वो भी आइसोसेलेस है, अगर अपना ACQ देखेगा वो भी आइसोसेलेस है, बिकॉज द साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और अभी अपना जो सेंटीमीटर था 11.3 सेंटीमीटर टोटल अभी मोड के. PB इज इक्वल टू AB, CQ इज इक्वल टू AC, मतलब टोटल अगर कैलकुलेट करेगा इट विल बी इक्वल टू 11.3 सेंटीमीटर. Thus we successfully completed the drawing or construction of a triangle when perimeter and the base angles are given. We can construct triangle in this way also, and it's very beautiful construction if done properly and having a lot of application in mathematical drawings and all. So we should love this kind of activity in mathematics, so that अभी जो हम किधर बैठा है जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं पहले सब पेपर में ड्राइंग किया होगा एक्यूरेटली, तभी बनाने को हुआ. मैं पहले बोला था सिम कार्ड बनाया, सिम कार्ड का इतना परफेक्शन है कि कौन सा भी मोबाइल में बैठते हैं, क्योंकि परफेक्शन इन ड्राइंग था, परफेक्शन इन कंस्ट्रक्शन आ गया, तभी वो बनने में हुआ. इवन मिलीमीटर डिफरेंस में वो बैठे या नहीं. उससे भी छोटा है मेमोरी कार्ड, SD कार्ड. How it is accurately and perfectly made. So accuracy in drawing is very important, so that accuracy in construction आएगा और accuracy in the material आएगा. So these kind of constructions are very important. Even if you calculate this also is equal to 50 degree, total is equal to 65, 115, then again 65, 180. All triangles have the total of the interior angle is equal to 180. So we have successfully completed our construction. Practice it.
Okay, thank you. Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.